वसीयत इमाम अली अलैहिस्सलाम, आखिरी हिस्सा। देखो, मेरे बदले में सिर्फ मेरा कातिल ही कत्ल किया जाए, और देखो, जब मैं इस ज़र्ब से मर जाऊं तो इस एक ज़र्ब के बदले में एक ही ज़र्ब लगाना और उस शख्स के हाथ पैर न काटना, क्योंकि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है कि खबरदार, किसी के भी हाथ पैर न काटो, अगरचे वो काटने वाला कुत्ता ही हो। Letter number 48, last part of commandment of Hazrat Ali alayhi salam. See to it that only one man, that is my assassin, is killed, as the punishment of the crime of murder is death, and nobody else is molested. The punishment to the man who attempted the murder shall take place only when I die of the wound delivered by him, and this punishment shall be only one stroke of the sword to end his life. He should not be tortured before his death. His hand and feet should not be amputated, because I have heard the Holy Prophet ﷺ saying, "Do not amputate hands and feet of anybody, be it a biting dog."